was way too late for class. If you're wondering what Amna is doing on that side, Amna is looking at Assalamualaikum everyone, hope you all are doing great. And आज का vlog is after so many days because I was busy with a lot of other stuff, so मुझे टाइम नहीं मिलता था, और जब टाइम मिलता था तो I was too lazy to film or record anything. तो मैंने आज सोचा कि मैं आज अपना vlog बनाती हूँ because आज मेरा day is a little different. I just woke up, as you can see I got ready and अभी मेरी class है तो मुझे class के लिए जाना है. And so I just got ready. I still have to change and everything, but yes, I'll show you the day how it goes. And I'm really sorry for not being so active these days, but I will try to at least upload one vlog per week, every week. So I will try to do that. Till then, thank you so much for all those subscribers, followers who watch me, who see me on my Instagram and everything. But yes, I have decided to be more active from now on, so let's hope that works. And till then I'll show you my day, and I hope you enjoy the vlog today. यहाँ पे बन रही है मिस्टर हस्बैंड की चाय because चाय is very important. और यहाँ पे मैं जब तक चाय बन रही है तो मैं अपना शो देख रही हूँ. Let me show you one other thing. Look at how pretty these roses are. So pretty. I'm so in love with these roses. Husband got me, so very nice. मेरे पास सारी Nespresso इतने दिनों से ऐसी पड़ी हुई है because I have no pods, but I have ordered the pods and they will be here soon. And इतने दिनों से very nice, इसमें pod भी लगा हुआ था. So yes, I have ordered, so let's see when they come. Till then, let's watch and make chai. अच्छा, मुझे हो रही है क्लास के लिए बहुत देर, which is why we're just gonna go and wake up husband so that he wakes up and gets ready. He's still sleeping. So I'm all ready now, and अब मैं सिर्फ husband का वेट कर रही हूँ कि husband because बिल्कुल end time पे उठा है, and I have to be there by 9, and I think it's already 8:35. So we have to rush and I have to get coffee on the way, but I don't think that's going to be possible. So let's see, because my university is around 15 to 20 minutes from here. So let's hope I get there on time, and yes, let's wait for husband to get ready first. So you guys, I did go to the class, but I couldn't record because I was way too late for class. तो फिर मैं जल्दी से बस क्लास चली गई थी, and अभी हमारी हुई है पहली ब्रेक. तो अभी मैं नीचे आई हूँ और अहमद मुझे ड्रॉप करके चला गया था, इसीलिए फिर मैं अहमद को भी नहीं दिखा पाई. But I will show Ahmad at the end of the vlog, hopefully, because he'll be back at night. So yes, stay for that because it's been very long since you guys have seen us together. So I will be posting that. पर अभी अहमद आ रहा है, बल्कि अहमद अभी आ रहा है मुझे कॉफ़ी देने के लिए. तो I am just gonna wait for a little bit जब तक वो यहाँ पे आए और मुझे दे. And look at how pretty it is over here. Let me show it to you. सही से पीछे. So this is how it looks. It is so pretty. और ये हमारी यूनिवर्सिटी का पीछे का साइड है, which is very pretty. There are also a lot of ducks and it has like a bridge बीच में, which is really cute. So I love this place. Break में फिर हम यहीं पे आ जाते हैं. ये मेरा मियाँ आ गया मेरी कॉफ़ी लेके. कुछ ना आऊँ साफ कर लेना नीचे. क्यों? मैंने इधर रख दिया था. तो ये थोड़ा लगा दो ना इस पे. क्या लगा दो? साफ कर लो थोड़ा सा. You got me the coffee. डाल दूँ? हाँ डाल दो. एक काम करो, इसको थोड़ा पहले मिक्स कर लो. ये निकालो इसका. हम ये करते रहते हैं पूरा दिन क्लास में. We are finally at the cafeteria. This is how it looks. Let's see what they have for food today. मेरी कॉफ़ी अभी भी चल रही है. Actually gonna see what's for food. अब finally जाके we can sit peacefully for a little bit and have coffee because there's just so much going class में. There's literally so much going on in the class when you're there, and sometimes you just need a break. तो अभी हमारी break है for I think an hour. तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे relax करते हैं, उसके बाद हमें फिर से वहाँ पे जाने पड़ेगा. And I think Amna's gonna come to pick me up today, and then let's see what we do for the rest of the day. And finally अब हम आ चुके हैं क्लास में वापस. अभी तक लोग नहीं आए, but
थोड़ी देर में it'll be started and I'm already so tired. But I'm just waiting कि आमना मुझे आएगी पिक करने. Then we're probably gonna go out somewhere. Let's see where we go. And that I'm gonna show it to you कि कहाँ जा रहे हैं. I so want to go to First Colony, but let's see कि आज वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते. But yes, keep watching. So you guys, अभी मेरी classes हो गई हैं ख़त्म and it's finally time to go home. अभी I'm just waiting. अभी मैं नीचे जाती हूँ. Amna is gonna come to pick me up and then I'm gonna go नीचे and then let's see what we do for the day. So yes. बेटा ये आमना आ गई है मुझे पिक करने. This is how Amna sits in the car. Just by the way for you guys, this is how she comes to pick me up. Say hi, Amna. Say hi to my YouTube family after so long. Please say hi. Hi. Don't be shy. Say hi. Hi. So let's go. अभी पहले हम जाते हैं घर, थोड़ा fresh up हो जाते हैं, and then we'll decide what to do. So अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ and Amna is saying के आज जी हाल वाल बता. Amna, what do you want me to say? Tell me how your day went. Okay, I'll tell you how my day went. Also, one other very important announcement. Amna is graduating. I'm graduating, guys. So you will see that hopefully in a vlog that I hope that I upload. Because मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं because I am too lazy to upload and edit and all that thing. Too lazy. Yes, so I am too lazy. But let's hope that I get to edit that Tamise and that I post it actually. So Amna got her dress, I got my dress, and so Amna, how are you excited for the graduation? Also, just by the way, she's not graduating university or something, she's graduating high school. Very important point over here. She's graduating high school. So I will show you that day and अभी उसमें कुछ दिन है, so I will upload this vlog first and then hopefully I'll upload that soon too. So yes. अच्छा, by the way, just so you guys know, यहाँ पे extreme गर्मी हुई है and यहाँ पे हुई थी कल रात बारिश, जो मुझे लगा कि बहुत टाइम चलेगी, but कल रात हुई बहुत तेज़ बारिश and that was it. सुबह को यही गर्मी, धूप and everything. Hello. So you guys, we are finally home and अब हम थोड़ी देर आधा घंटा करते हैं रिलैक्स. आमना खाना लाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लाई है. We're gonna have that and then we are gonna go out. मुझे वैसे ही आज कहीं जाने का दिल कर रहा था, तो probably हम देखते हैं टारगेट जाते नहीं जाते. But we are gonna go to Sephora and First Colony maybe. तो let's see if we go there. I think we're gonna go to First Colony और फिर Marshalls देखते हैं, वहाँ पे करीब है तो फिर वहाँ पे भी चलते हैं. And I am so tired because classes are very tiring. पूरा दिन सुबह से दोपहर शाम हो गई है. वैसे अब शाम तक you get really tired. So अभी हम कुछ खाते भी हैं and फिर हम निकलते हैं again. आमना लाई है ये Hangry Joe's, which is halal fries and burger. So let's have this now. We are sitting in lounge and this is Amna sitting sofa पे ऐसे. और Amna, what are these hanging ये ऐसे? Cords. What are these? Awards. Awards. और आमना को सर्टिफिकेट भी मिला है. आमना, don't show your certificate just like that. Sorry. She also got a certificate, तो अभी उस पर brag कर रही है. I'm gonna get one tomorrow as well. Tomorrow as well. Are you? Could you tell us what's your graduation dress like? It's a silk dress. Just like something you're wearing right now. Yes, but a bit darker. Okay. Yes, queen. And look at this, my flowers. Aww. I love this setup यहाँ का because it's so pretty. और ये मेरे लैपटॉप को आमना ने तबाह कर दिया पूरे स्टिकर्स लगा के. It's so cute. It's okay, Amna, we understand. Thanks. Now I'm gonna have this. At college readiness. मैं आमना की बातें सुन रही हूँ कि आमना को और क्या क्या मिलेगा for the awards and everything. But that all you'll see in the future vlog where I go for Amna's graduation. And पर honestly अभी मैं ये बता रही थी, आमना ने मुझे distract कर दिया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है
which is also very bad. I was hoping कि आजकल बारिश होगी. Amna, stop interfering in my video. My beautiful awards. Amna is trying on her. Amna, just stay at one place, please. Amna is trying on her graduation gown. Just let the zip, just let it be, Amna, flower. So this is how Amna is gonna look on her graduation, except she's gonna be wearing a dress and some heels without the stupid socks. And here comes the graduation hat. Oh my god, Amna. This is my tassel. Oh my god, you're doing so much lambi, Amna. So yes. Amna, if you're wondering what Amna is doing on that side, Amna is looking at the mirror. Chote mirrors. And just let it go, Amna, just let it be. So you guys, we are finally in the car and now हम जाने के लिए ready हो चुके हैं. Now we are going to First Colony first and वहाँ पे हम देखते हैं कुछ लेते हैं, देखते हैं वैसे ही घूमने के लिए, because it's been very long since I went there. So I'm gonna go there. We're gonna go there and then yeah, let's see. बाकी I had the Dave's hot chicken. नहीं, what was it? Hungry Joe's. Hungry Joe's. It was so good. I loved it. But now I'm full and let's go and just घूमो and it's very 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 hot right now. And you must be wondering कि हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं. ऐसे कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि हम जब मॉल्स के अंदर जाते हैं, क्लासेस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे इतनी ठंड होती है that you cannot just wear a t-shirt and go. So that is why. Change of plans. पहले हम आए मार्शल्स. यहाँ पे पहले देखते हैं कुछ, उसके बाद कहीं और चलते हैं. So this is us today. Don't mind my slippers, but this is us. Now we are going to another one. So yes. Let's go. अब ये रह गया है कि आमना बस इस पे खड़ी हुई है और मैं इसको चला रही हूँ. आमना, are you serious? Yes. This is what I'm doing now. And this is what happens. Finally अभी वहाँ से निकल गए हैं. हमने कुछ चीज़ें ली and that's about it for Marshalls. अभी हम एक्स्ट्रा थक गए हैं. अभी हमें सिर्फ फाइनल एक काम करना है कि हमें जाना है वॉलमार्ट. वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ मेरी चीज़ें लेनी है, कुछ आमना को चीज़ें लेनी है. तो हम वहाँ पे अभी जा रहे हैं. अब ट्रैफिक शाम का क्योंकि टाइम हो चुका है एंड शाम भी लेट शाम हो चुकी है, लेट इवनिंग. तो अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट बिकॉज आई वांटेड टू गो टू क्रोगर पर्सनली, बट आमना को कुछ वॉलमार्ट से चाहिए, पता नहीं कोई केक है और समथिंग, आई डोंट नो. So that is the only reason we're going to Walmart, which is 15-20 minutes even more far. So we're just going now and I'm super tired. So yes. Look at how pretty this whole place looks. Of all things Amna can do, Amna आके इस पे बैठ गई है इसको चलाने के लिए. Is it not working? Huh? Is it not working? It is working. Let's go. मतलब, are you kidding me? This is what she does. और मैं बड़ी हूँ और मैं ऐसे चल रही हूँ. So useless. Okay, we have to get some vegetables. So let's do that. This place, it's so pretty. हमने ये ले लिया and I don't know why, but यहाँ पे ना बहुत ही छोटे से like this much. So we got those. Now we're getting onion and let's see फिर क्या लेते हैं. इस पे आमना ने घूमते ये सारी चीज़ें ले ली हैं. Now let's go get bread and eggs. I don't know why रोशनी बहुत ही अजीब आ रही है, but I know you are back. So मेरा ये सिरप ख़त्म हो गया था वाइट चॉकलेट का, that I wanted to get, so I'm getting that now. और what else to get I don't know, but ये मेरा पीछा
ये सिर्फ टर्न करने में ही है और लोग इसको जगह दे रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट इसकी टांग वांग में मसला है। यार ये चल नहीं पा रही बेचारी, सफरल्ला। दिस इज बाय होल्ड सामना। सो लेट्स गो एंड नाउ गेट रेड एंड लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। अब हमने सारी चीज़ें ले ली, अब आपने इसको कर दिया पार्क वापस। मतलब ज़िंदगी में आमना को कोई काम नहीं है अभी। एंड देन शी इज गोना ब्रिंग ऑल द बैग्स। अभी फाइनली वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है एंड फाइनली आमना इज हियर। लेट्स गो। So you guys, I am finally home. We are finally home. मैं आमना आ गए हैं घर and I am super tired, as you guys can see from my shakal. Very tired, but I still have to make dinner. और आज सुबह से मैं बाहर हूँ, so I have heard, honestly, I have heard so many people say that the only thing that we see you make is either biryani or कढ़ाई. But the only reason for that is जब भी मैं vlogging करती हूँ तो मैं पूरा दिन मेरा इतना busy रहता है that I do not get time to make something else. Those are the easiest things, the quickest thing फौरन से बन जाती हैं. I promise I do know a lot of other things that I can make. अभी recently I did try आलू गोश्त for the first time ever in my life. तो मुझे पता नहीं था कैसे बनाना है, तो मैंने 2, 3, 4, 5 रेसिपीज़ ऑनलाइन ढूंढी। उनमें से एक रेसिपी मतलब अपनी बनाई, सबसे थोड़ा थोड़ा निकाल के। एंड टू माई शॉक इट वॉज वेरी नाइस. अहमद रियली लव्ड इट, everyone loved it. तो and I do keep trying a lot of other stuff, but जब भी मैं वो चीज़ें बनाती हूँ तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती बिकॉज फिर वो उसी में मैं बहुत ही बिजी हो जाती हूँ. बट नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं वीकली एटलीस्ट 1 व्लॉग आई अपलोड, तो आई विल ट्राई टू शो मोर थिंग्स. बट टिल देन बेयर विथ मी. एंड आज तो मैं बना रही हूँ सिंपल सी चिकन बिरयानी. So I'm just gonna make that in a bit. अभी I'm just gonna relax for a little bit. अभी जो चीज़ें लाए हैं उनको भी सही करना है, which is also a very big task because too much. and अभी इतनी गर्मी थी बाहर कि अभी फाइनली घर पे आके कुछ सुकून मिला है. और अभी घर का टेम्परेचर is 72, which is ज़्यादा, तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं. इसको 70 कर दिया for now. Look at this आमना. Okay. तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं बिरयानी. एंड आई ऑल्सो आई थॉट ऑफ मेकिंग ब्राउनीज टुडे, बट आई एम नॉट श्योर. आमने सिंह कि आज नहीं बनाओ, सो लेट अस सी कि मैं क्या करती हूँ, बनाती हूँ नहीं बनाती. अभी हम गए थे, सो आई गॉट दिस क्यूट कैंडल विच आई एम रियली लाइकिंग. वेट लेट मी शो इट टू यू सही से. दिस इज़ द कैंडल दैट आई गॉट. आई रियली लव्ड इट. इट इज़ सो प्रिटी and it matches the vibe of this place. So yes, it looks pretty now except for all the lighters in my laptop. Otherwise it looks very nice. I like it. It's really cute. मैंने ये 3 का सेट लिया था which had this one and a mist and this candle. I absolutely love this one. This diffuser, it is called it, yes, it is a diffuser. I really love it because my lounge smells so pretty and so nice, and whenever I enter the house it's really nice and cozy, gives very cute vibes. So this is the one. I really love this one. I think ये आधा हो चुका है. So आज मैं गई थी तो the candle that I showed you, I got that, and I got a really cute thing. I got this. This is a bow tray, ice tray set. It has like 2 trays and they're so cute. Look at this. So मैं अपनी कॉफ़ी की पूरी तैयारी कर रही हूँ कि जब मेरे नेस्प्रेसो पॉड्स आ जाएंगे, so I'll use these. पहले मैं नॉर्मल जो हमारी फ्रीजर में आइस होती थी, I used to use that, but it was so boring, so I got this, and this is gonna be super cute. Now what I need in my life is a cute iced coffee glass. That is what I'm gonna get now, but I so love this one, so I thought I'd share it with you guys. So pink. So you guys, the biryani is ready.
I think it looks really nice today. So this is ready. And मैंने brownies भी बनाए थे, वो भी ready हो गए with all the flowers and very pretty, very cute. So you guys, that was all for today. मैं इतनी थक गई थी कि फिर मैंने फ़ौरन से बस उसी टाइम मैं खड़ी हो गई थी, फिर मैंने बिरयानी भी शुरू कर दी, फिर मैंने brownies भी बना दिए. And then now finally I just got changed and I am about to relax now because पहले मुझे बिल्कुल I was like मैं सारा काम करके फिर आके मैं बैठती हूँ. अब मैं फाइनली आके बैठी हूँ and I am super done for the day. And yes, that was about the day, my day for today. And I really hope you guys enjoyed the vlog today, and if you did, do like and subscribe. Do not forget to subscribe because that means a lot to me. And thank you so much for watching, and keep watching, and the next vlog will be out very soon. Thank you. Bye bye.